Psychometric tests. These tests are given once you clear your IMU. You will be going for company specific tests, and after that you will be assessed on psychometric tests. Most of the candidates, they clear the interview, they clear their written test, however they fail in psychometric tests. If you fail in psychometric tests, unfortunately you are not selected. So they are integral part of any selection in any good company, and each company has a specific test. However, here we'll understand what psychometric tests are, what do they assess, and then we will be practicing number of tests, sample questions, and I will be giving you tips on how to handle these tests. First of all, let's find out what psychometric tests are. Psychometric tests are standardized and validated tests. This means that they have undergone a lot of validation. They've been standardized throughout the population. That means the sample size has been very large and they can be adopted to or adapted to any population. So sample size is something like more than thousands, and then they are validated, these tests, through statistical methods. What do these tests measure? They measure a person's mental capability. That means your aptitude. What is your mental capability? And your behavioral style. That means your personality, your characteristics, your inherent traits. What makes us us? Those traits, your behavioral style and your aptitude and your personality, are assessed through these tests. Very, very scary? It should not be, because if you are comfortable with who you are, you will clearly sail through these tests. Let's look at what else these tests do. Psychometric test measures candidates' suitability for a role based on their personality characteristics and aptitude, also known as cognitive ability. Okay, so what happens is these tests are given to a suitable candidate, the candidate whose CV or who has cleared some written test. They are given these psychometric tests, and they are then the candidate's personality and aptitude is assessed, whether this person is suitable for a role, for a particular role or a job, whether his profile and the job's profile are congruent to each other. That means you might be, for example, you might be very good in mathematics. Your aptitude in mathematics is really, really good. However, your personality trait, we check that it is of an extrovert who cannot work 9 to 5. He cannot sit in office environment. He likes roaming around. He's an extrovert. So it is a clash. So then you will be assessed for which job is more suitable to you. So a lot of children must have gone for career counseling. If you went for career counseling, your aptitude, did you take aptitude test? That is one of it's a type of psychometric test. They identify traits of candidates' personality and cognitive abilities, those required to perform a job. In Merchant Navy, you remember, we require people who have good leadership qualities, who are highly patient, who can undergo lot of stress, and they remain calm even during emergency. So these are the inherent characteristic traits of a Merchant Navy officer, what people are looking for. So that is what these tests will identify whether you have it or not. Don't be daunted. Don't think, oh, I don't have these traits. What am I going to do? It's not like that. We do not, so many times at your age especially, you do not know what your personality is like. There are a lot of layers to our personality. Some
traits we are born with, some we acquire over a period of time, and we as a psychometric tool, psychometric test helps in assessing those characteristics which are hidden. That's what the next point says. Employers use this information collected from the psychometric test to identify the underlying traits of a candidates that are difficult to garner from a face-to-face interview. Now, face-to-face interview is in a clinical sort of a situation. It is controlled. You give controlled answer. The interview can only assess that point, okay, that part. However, to get to know you in depth, what your underlying traits are, psychometric tests help in those. The psychometric tests are constructed to be objective and unbiased. This is very important. That means it's not that somebody's subjective. When you take face-to-face interview, the interviewer might be in a bad mood. You might be extremely nervous. Your interview does not go well according to your plan, or the interviewer's mood was bad, or he did not like your personality type the moment you walked in. So there is a lot of subjectivity involved there. However, these tests, nobody checks you individually. Nobody's individual thought goes into it. It is highly objective, and also it is the same for everyone. The situation is given to every person, and you, according to your experiences, you according to your intelligence, your knowledge, your thought process, thinking, cognitive ability, you answer these, and it is the test is then statistically measured. That means there is a formula to measure it. You are assigned that the formula is used. So there is, everything is highly scientific, okay? So there's no subjectivity involved in these tests. Now that you have got a brief of what psychometric tests are and what they assess, let's do some sample testing. So always remember, whenever a test is given, a psychometric test is given to you, please, mark my words, please do read the instructions. You must always read the instructions. So in this questionnaire, let's read the instructions. Psychometric tests are used in recruitment and selection of candidates by most of the companies. They measure your personality traits, your interests and ability. There is no right or wrong answer. Remember that. In this test, no marks are given. There is no negative marking, and there is no question or there is no answer which is right or which is wrong. Okay, it depends on the situation, and it depends on what you think, what kind of a person you are. However, they give an insight to which traits are suitable for the job in question and which ones are not suitable. So let's take a look. Please choose the most appropriate option for the given statements. Now in this one, there are only two options given: agree or disagree. Okay, so you can only choose one option, and each option in the paper, the real psychometric test, you will not be given any explanation, and it might have just two options, or it may be on a 5-point scale, 7-point scale. So we will do all those tests later. Let's just begin with the simplest of test first. I would recommend that you do these tests simultaneously. You read the question, you keep a blank sheet with you and a pen, and you just write an answer. Write one, and you agree, or in case you don't agree, you say disagree. Just go along, don't read the explanation. You will see how you fare. Okay? So just take a paper, bring a pen, and let's get going. I think most people are honest by nature.
Now whether you think that way or your experience says otherwise, remember psychological English is little twisted. That means there is no straightforward putting forth the idea. Okay, it might not be, sometimes you might not understand the question, so you are within the right, in case there is an invigilator, you're within your right to ask them the meaning of the statement. All right, let's see. I think most people are honest by nature. You may agree with this statement or you may disagree कि बहुत सारे आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनेस्ट होते हैं, सत्यवादी होते हैं. आप एग्री कर सकते हो या डिसएग्री. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज मेजरिंग ऑनेस्टी एज अ ट्रेट. सिंस देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. If it is for sales job, then agreeing with the statement will mean you are not suitable for the job as it involves negotiation and marketing. इसका ये मतलब हुआ, अगर तो आप एग्री कर रहे हो कि हाँ सब लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और ये जॉब आपने अप्लाई की है सेल्स के लिए, तो आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो, क्योंकि इस सेल्स जॉब में हमें नेगोशिएशन चाहिए होती है, लोगों से मार्केटिंग करनी होती है, तोल मेल करना होता है. ओके, सो आपके लिए ये जॉब नहीं है. However, agreeing with the statement will make you suitable for jobs such as counselor or a teacher. अगर आप इस क्वेश्चन के साथ एग्री कर रहे हो, दैट मीन्स यू बिलीव इन पीपल कि उनमें अभी भी ऑनेस्टी है, गुडनेस है. सो फॉर यू काउंसलिंग एंड टीचिंग जॉब इज अ बेटर जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन. While driving, I sometimes get irritated when traffic is slow moving. आपको जब आप ड्राइव कर रहे हो, अभी तो आप शायद 18 के हुए नहीं, मे बी आप साइकिल चला रहे हो या कभी आपने स्कूटर ड्राइव किया है. अगर आप 18 के हो गए और ड्राइव करते हो तो ड्राइव करते हुए आप खिंचते हो, बहुत गुस्सा चढ़ता है आपको बहुत जल्दी, कभी कभी के ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है. इफ यू एग्री, और ये क्या क्वेश्चन मेजर कर रहा है? ये मेजर कर रहा है आपकी एंगर, आपको कितना जल्दी गुस्सा चढ़ता है. इफ यू एग्री विद द स्टेटमेंट, इट इंडिकेट्स यू आर प्रोन टू एंगर. दैट मीन्स आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जा सकता है, आप में एंगर इश्यू है. इफ यू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, कैन बी इंडिकेटिव ऑफ faking the answer, as once in a while everybody tends to get angry. Now you see, these questions are not that straightforward. अगर आप सोचो कि मैं इसको चीट कर दूंगा या मैं बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करो इन क्वेश्चंस में, पर यहाँ इनमें ट्रिक क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन था, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था. अगर आप डिसएग्री कर दो कि नहीं मैं तो नहीं खिंचता, तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कभी कभी हमें गुस्सा जरूर आ जाता है, once in a while. So this shows your personality type, whether you are honest or not, or whether you are faking. So it is measuring two traits in one question. So never try to cheat in psychometric test. कभी साइकोमेट्रिक टेस्ट में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं जो बता देगा कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं हो. सो गिव द आंसर विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को और रिफाइन करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे. और फिर कई बार ऐसा होता है, जब फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें सिचुएशन नहीं याद आती, या याद आती है तो वो सिर्फ एक सिचुएशन पे डिपेंड करता था, दूसरे पे नहीं. बाद में आपको रिग्रेट होता है. सो विद प्रैक्टिस यू विल बिकम एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ व्हाट एंड हाउ योर पर्सनैलिटी इज. नेक्स्ट, आई डू नॉट स्लीप पीसफुली. आप नींद अच्छी नहीं आती, आपको अच्छी पीसफुल नींद नहीं आती है. दिस क्वेश्चन मेजर्स योर स्ट्रेस. If you agree, it is indicative of being stressed. So disagreeing with the statement shows you are good at handling stress. ठीक है? That means अगर आप agree कर देते हो, that
उसका मतलब है आप स्ट्रेस लेते हो बहुत। क्योंकि जब एग्जाम का डर होता है, स्ट्रेस हो जाता है, या कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, या मम्मा पापा डांट देते हैं, तो आपको रात को नींद नहीं आती, आप टॉस एंड टर्न करते रहते हो, करवट बदलते रहते हो। सो दैट शोज दैट यू आर स्ट्रेस्ड। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हो कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन इसमें लैंग्वेज, आई डू नॉट स्लीप पीसफुली, तो डिसएग्री करने शोज कि आप स्ट्रेस हैंडल बहुत अच्छा कर लेते हो। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, आई हैव क्लियर पर्सनल गोल्स, सॉरी, I have clear personal goals. This question is measuring your leadership qualities. That means आपके जो अपने पर्सनल आपके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, आपके माइंड में आप पूरा फोकस है, उन पर कंसंट्रेशन है। अगर तो आप एग्री करते हो, दिस शोज कि आपके पास विजन है, जो कि एक लीडर के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप डिसएग्री करते हैं इससे, दैट मीन्स आपका फ्यूचर क्लियर नहीं है, आपने अभी तक कोई गोल ही नहीं सेट किया अपने फ्यूचर के बारे में, एंड यू मे नॉट बी सूटेबल फॉर मर्चेंट नेवी, आर्म्ड फोर्सेस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी जॉब्स के लिए, प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक इंटरैक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब है कि आप का ये एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट को, एक्स्ट्रावर्जन वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग होते हैं, लाउड होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, जिनको लोगों से मिलना अच्छा लगता है। ठीक है, वो होते हैं एक्स्ट्रावर्ट्स। और इंट्रोवर्ट होते हैं पीपल हु लाइक देयर ओन स्पेस, पीपल हु एंजॉय बीइंग बाय देमसेल्व्स, दे डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, दे डू नॉट लाइक इंटरैक्टिंग, जो चुपचाप रहते हैं उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेट्स अंडर दीज टू कैटेगरीज, आई विल नॉट गो इनटू इट अभी। लेट्स सी, अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, देन यू आर एन इंट्रोवर्ट and not suitable for jobs like customer service, merchant navy officer, human resources. That means अगर आपको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना, बाहर जाना, तो आप इस तरह की जॉब्स के लिए नहीं सूटेबल हैं। ओके, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आपको बहुत तरह के लोगों से मिलना होता है। यू विल गो अराउंड द वर्ल्ड, इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हो। एज एन ऑफिसर यू विल बी meeting so many people from various nationalities। एक तो आपके साथ ही इतने लोग काम करेंगे, उसके बाद आप दूसरी किसी नई जगह में जाओगे, वहां पे लोगों से आपको बातचीत करनी होती है, नेगोशिएशंस करनी होती है, बहुत कुछ होता है। सो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। However, अगर आप एग्री करते हैं तो आप एक गुड कैंडिडेट हैं इन सब जॉब्स के लिए, एंड जिसमें ओके, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो इसी के लिए, तो आपके लिए सूटेबल होती हैं जिसमें कस्टमर इंटरफेस नहीं होता, जिन जॉब्स में आपको कस्टमर से या लोगों से नहीं मिलना होता, लाइक ऑफिस जॉब है कोई, बैक एंड जॉब है कोई, दैट टाइप ऑफ जॉब। ओके, सो दीज वर ओनली 5 क्वेश्चंस। आपको जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आएंगे उसमें 180 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 160 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया जा रहा है, और उसमें टाइम लिमिट भी होती है। बट दिस वाज द फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन, हाउ डिड यू फेयर। आपने साथ साथ इनको आंसर किया तो आपको पता चल गया आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है इन क्राइटेरिया पे। ओके, सो वी विल कंटिन्यू डूइंग सैंपल क्वेश्चनर्स।